हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा सीटेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस टॉप 50 में हम लोग ईवीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ए ओनली लिविंग थिंग्स, बी ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और डी ओनली प्लांट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पर्यावरण में जीवित पौधे, जानवर, मनुष्य और निर्जीव हवा, पानी, मिट्टी दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्टिविटी डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस मोस्ट? A. Planting trees, B. Recycling waste, C. Deforestation or D. Saving water. So the right answer is option number C. Deforestation. वनों की कटाई से खाद्य श्रृंखला और जलवायु प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, why is water conservation important? A. Water is unlimited, B. Water can be manufactured, C. Fresh water is limited or D. Water has no use. So the right answer is option number C. Fresh water is limited. मीठा जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, which example best shows human environment interaction? A. Reading books, B. Farming according to rainfall, C. Watching TV, D. Playing games. So the right answer is option number B. Farming according to rainfall. खेती वर्षा और जलवायु पर निर्भर करती है। Question number 5, the best way to teach environmental sensitivity is A. Lecture method, B. Rote learning, C. Nature walk and observation, D. Written test. This is option number C. Nature walk and observation. प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। Question number 6, which gas cause global warming? A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Carbon dioxide or D. Hydrogen. So the right answer is option number C. Carbon dioxide. CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाती है। Question number 7, which practice is environment friendly? A. Using polythene, B. Burning garbage, C. Using cloth bags, D. Cutting trees. So the right answer is option number C. Using cloth bags. कपड़े के थैले प्रदूषण कम करते हैं। Number 8, why should children learn about environment early? A. For exam only, B. To develop responsibility, C. To increase marks or D. To memorize fact. Number B. To develop responsibility. प्रारंभिक शिक्षा से जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। And which resource is renewable? A. Coal, B. Petroleum, C. Sunlight or D. Natural gas. So the right answer is option number C. Sunlight. सूर्य ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। Question number 10, EVS mainly helps learner to A. Memorize information, B. Understand surrounding, compete with other or D. Learn definition. So the right answer is option number B. Understanding surroundings. EVS बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ता है। Number 11, family is important for a child because it provides A. Discipline only, C. Education only or D. Money. So the right answer is option number B. Emotional security. परिवार भावनात्मक सुरक्षा देता है। Question number 12, which family system promotes sharing or cooperation more? A. Nuclear, B. Joint, C. Single or D. Small. So the right answer is option number B. Joint. संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना अधिक विकसित होती है। 13, change from joint to nuclear families is mainly due to A. Agriculture, B. Urbanization, C. Festivals or D. Climate. So the right answer is option number B. Urbanization. शहरीकरण के कारण परिवार छोटे हो रहे हैं। Question number 14, family helps in developing which value first? A. Competition, B. Aggression, C. Love and care or D. Fear. So the right answer is option number C. Love and care. परिवार बच्चे का पहला सामाजिक विद्यालय है। 15, learning family roles help children to A. Judge other, B. Understand responsibility, C. Fight or D. Control others. So the right answer is option number B. Understand responsibilities. भूमिका समझने से जिम्मेदारी विकसित होती है। Question number 16, which activities strengthen family bonding? A. Watching TV alone, B. Eating together, C. Using mobile phones or D. Sleeping separately. So the right answer is option number B. Eating together. साथ भोजन करना आपसी संबंध मजबूत करता है। Question number 17, respecting elders teaches children A. Fear, B. Obedience only, C. Values and discipline, D. Silence. So the right answer is option number C. Values and discipline. इससे नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। Question number 18, family diversity should be taught to A. Compare families, B. Promote equality, C. Create confusion or D. Rank families. So the right answer is option number B. Promote equality. सभी परिवारों का सम्मान सिखाया जाना चाहिए। In which learning outcome is linked with family topic in EVS? A. Mathematical skill, B. Emotional development, C. Writing speed or D. Memory only. So the right answer is option number B. Emotional development. EVS सामाजिक भावनात्मक विकास पर बल देता है। Question number 20, teacher should handle family differences by A. Highlighting one type, B. Encouraging acceptance, C. Ignoring discussion or D. Creating competition. So the right answer is option number B. Encouraging acceptance. समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। Question number 21, friendship help children develop A. Isolation, B. Social skill, C. Fear or D. Laziness. So the right answer is option number B. Social skill. मित्रता से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। Question number 22, group activities are encouraged in EVS because they A. Reduce syllabus, B. Promote cooperation, C. Save time or D. Create noise. Answer is option number B. Promote cooperation. EVS सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है।
Question number 23. Peer learning means A. Learning from teacher only, B. Learning from books, C. Learning from friends, or D. Learning alone. So the right answer is option number C. Learning from friends. मित्रों से सीखना सहपाठी अधिगम है. Question number 24. Conflict among friends should be resolved by A. Fighting, B. Complaining, C. Discussion, or D. Ignoring. So the right answer is option number C. Discussion. संवाद समस्या समाधान सिखाता है. Question number 25. Friendship promote which democratic value? A. Equality, B. Domination, C. Fear, or D. Control. So the right answer is A. Equality. मित्रता से समानता और सम्मान होता है. Question number 26. Games with friends help in developing A. Jealousy, B. Team spirit, C. Anger, or D. Loneliness. So the right answer is option number B. Team spirit. खेल टीम वर्क सिखाते हैं. When a good friend is one who A. Orders other, B. Help and supports, C. Teases, or D. Dominate. So the right answer is option number B. Help and support. सहयोग मित्रता का आधार है. 28. EVS teaching should encourage friendship to A. Improve marks, B. Build social harmony, C. Reduce syllabus, or D. Control children. So the right answer is option number B. Build social harmony. सामाजिक समरसता EVS का उद्देश्य है. Question number 29. Which classroom practice promote friendship? A. Individual task only, B. Group projects, C. Punishment, or D. Competition. So the right answer is option number B. Group projects. समूह कार्य सहयोग बढ़ाता है. Question number 30. Friendship helps children emotionally by reducing A. Happiness, B. Stress and fear, C. Learning, or D. Curiosity. So the right answer is option number B. Stress and fear. मित्र भावनात्मक सहारा देते हैं. Question number 31. Shelter mainly protect us from A. Food, B. Friends, C. Weather and danger, D. School. So the right answer is option number C. Weather and danger. घर सुरक्षा और आराम देता है. Question number 32. Different shelter exist because of A. Fashion, B. Climate and needs, C. Education, or D. Age. So the right answer is option number B. Climate and needs. पर्यावरण के अनुसार घर बनाए जाते हैं. Question number 33. Houses on stilt are found in A. Desert area, B. Flood prone area, C. Mountain, or D. Cities. So the right answer is option number B. Flood and prone areas. बाढ़ से सुरक्षा के लिए stilt घर बनाए जाते हैं. Number 34. Which shelter is temporary? A. Flat, B. Bungalow, C. Tent, or D. House. 35. Igloos are suitable for cold region because they look attractive, B. Are cheap, C. Keep interior warm, or D. Store water. So the right answer is option number C. Keep interior warm. बर्फ गर्मी को बाहर जाने से रोकती है. Question number 36. Teaching shelter topic help children understand A. Decoration, B. Human adaptation, C. Architecture, or D. Engineering. So the right answer is option number B. Human adaptation. मनुष्य पर्यावरण के अनुसार ढलता है. Question number 37. Nomadic people prefer tent because they are A. Permanent, B. Heavy, C. Easy to move, or D. Expensive. So the right answer is option number C. Easy to move. घुमंतु लोग स्थान बदलते रहते हैं. Question number 38. Which shelter is common in urban areas? A. Hut, B. Cave, C. Flat, or D. Tent. So the right answer is option number C. Flat. शहरों में अपार्टमेंट सामान्य है. Question number 39. Animal shelter should be taught to show A. Comparison, B. Human superiority, C. Diversity in nature, or D. Fear. So the right answer is option number C. Diversity in nature. सभी जीवों के आश्रय अलग अलग होते हैं. Question number 40. Birds build nest mainly to A. Decorate trees, B. Protect egg and young ones, C. Play, or D. Store food, B. Protect eggs and young ones. घोंसला सुरक्षा देता है उनके बच्चों को और उनके अंडों को. EVS learning is best assessed by A. Written exam, B. Observation and activities, C. Memorization, or D. Oral test only. So the right answer is option number B. Observation and activities. EVS अनुभव आधारित विषय है. Question number 42. EVS curriculum focuses most on A. Fact, B. Rote learning, C. Child surroundings, or D. Competition. So the answer is C. Child surrounding. बच्चे का परिवेश केंद्र में होता है. Question number 43. The best teaching method for EVS is A. Lecture, B. Activity based learning, C. Dictation, or D. Memorizing. So the right answer is option number B. Activity based learning. गतिविधियाँ सीखने को स्थायी बनाती हैं. Question number 44. Which value is common to environment, family, and friends? A. Competition, B. Care, C. Fear, or D. Control. So the right answer is option number B. Care. देखभाल और सहयोग सभी में समान है. Question number 45. EVS promotes learning that is A. Isolated, B. Fragmented, C. Integrated, or D. Rigid. So the right answer is C. Integrated. EVS विषयों को जोड़कर सिखाता है. Question number 46. The role of teacher in EVS is mainly to A. Give information, B. Facilitate learning, C. Control student, or D. Test memory. So the right answer is option number B. Facilitate learning. शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है. Question number 47. Which question promotes higher order thinking? A. Define family, B. List type of houses, C. War in regions, or D. Name animals. So the right answer is option number C. Why do houses differ in region? क्यों वाले प्रश्न विश्लेषण विकसित करते हैं. 48. EVS help children become A. Bookish, B. Environment sensitive,
C. Competitive or D. Silent. So the right answer is option number B. Environment sensitive. EVS जागरूक नागरिक बनाता है. 9. Learning about friends help in developing A. Individualism, B. Social harmony, C. Isolation or D. Fear. So the right answer is option number B. Social harmony. मित्रता सामाजिक समरसता सिखाती है. Question number 50. The ultimate goal of EVS teaching is to A. Complete syllabus, B. Score marks, C. Develop responsible citizen or D. Memorize content. So the answer is option number C. Develop responsible citizen. EVS का लक्ष्य जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना है. तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि EVS पर बेस्ड थे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.